So, myself, Dr. Sushelio, uh, I'll be taking a mathematics lecture. Uh, I've done my PhD. Let me introduce myself a little bit. I've done my PhD in mathematics. Currently working at university also, teaching MSc guys, and yeah, a lot of things are there. So I think only 1 hour lecture we have got. So we'll be starting with the lecture only for those. So we're going to start with polynomials. And okay, this. Okay. So here you can see this. So topic name is what? Polynomials. So basically what is polynomials? Um, a polynomial is an expression consisting of variables and coefficient that involves only the operation of addition, subtraction, multiplication, non-negative. You must have seen like this. ऐसा कभी देखा है? I mean, like you must have seen like this: x square minus 3x plus 6, or else you must have seen like 3x square, or else you must have seen like 2x plus 1. Yeah. So you must have seen like this. I mean, these expressions we call as polynomials. हम इनको क्या बोलते हैं? Polynomials बोलते हैं. Yeah. So on these expressions we are going to study like what is exactly polynomials. So in polynomials, what I'm saying is there's an expression costing variables. This word is important. Variables, costing variables, and coefficients. There are two things into this: variables and coefficients. So when I'm talking about variables means what exactly? Variables means something which varies. Yeah, something which varies. जो vary करता है. Like if I'll say as 2x, yeah, and I'm saying as x can be equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. So इसका value देखो vary कर लेगा. 2 into 1, so answer is 2. 2 into 2, so answer is 4. Like 2 into 3, so answer is 6. 2 into 4, so answer is 8. Like, so the value varies. I mean, like we are putting the values into x. So this type of variables we call as what? This is variable, like, and whole answers depends on this. Whole answer depends on this. So that's why we are calling this as variables. And you can see this 2 is there. So this we call as coefficient. So what do you call? Like coefficient of x you call. Yeah. So coefficient of x. If I'll ask you, what is coefficient of x? Just reply me in the chat box. Like, what is the coefficient of x in this? You can reply in the chat box. Come on. Yeah, perfect. Very nice. And what is coefficient over here of x? What is coefficient of x? So similarly, I mean, like, yeah, very good. It's not 3. It is minus 3. It is not 3. I'll say as minus 3 is the coefficient over here. Yeah. So minus 3 is the coefficient over here. It's not 3. So, I mean, like we are going to learn more. Don't worry. So this is what you call as coefficient. So any of the expression which looks like this, you're going to call this as what? Polynomials. We'll be studying more about this. So, hold on. Yeah, next PPT is there. So you can see this over here. One we call as monomial, then we call as binomial, then we call as trinomial, then we call as what? Polynomial. So we're going to study about all these things. What is monomial? What is binomial? What is trinomial? And what is polynomial? So we'll start further. So monomial is basically is a polynomial with just one term. Only one term is there. Like this is 3x. How many terms are there? Only one term is there. If I'll say as 4xy, how many terms are there? Again, only one term is there. If I'll say as myself, like Sushil x, so only one term is there. Like this is coefficient of x over here. Like some numbers, some coefficient and term. Yeah. So this type of terms we call as what? Monomial. Having only one term.
Only one term is there. In binomial, you'll be having two terms. It is like this, 2x plus 5. So you can see this. 2x plus 5, how many terms are there? So two terms are there. Like if I'm writing as 3x square plus 5. Again, this is what binomial. I mean, like how many terms are there? So again, this is two terms. Yeah, if I'll say as 9x plus 5y. How many terms are there? Like, so again, this is I'll call as two terms. So this is things what we call as binomial. Yeah. Then we comes to trinomials. Trinomial is basically, here I've written, a trinomial is a polynomial consisting of three terms or three terms of monomials. It is like of monomials like this. Now, so how many terms are there? Combined terms are there like 3x plus 5y plus 7z. So we have three terms. This type of terms we call as what? Trinomial. If I'll say as what? 5x plus 6y plus 7. So this is again a trinomial. I hope this is clear. Monomial, binomial, and trinomial is clear. Very basic concepts it is. I hope this is clear. Just say clear in the chat box. You can write this as clear in the chat box. I'll get to know. Like, or if any doubt is there, you can. Okay. Mhm. Thank you. Yeah. So we'll proceed further. Okay. So let me explain furthermore. Like you'll get. So types of polynomials. I mean, like again, here I've taken certain examples also. Monomial, as I told you, only one term in the polynomial. Only one term will be there. That type of terms we call as what? Monomial. Again, I'm repeating the same. If it is not clear. And two terms in the polynomials, like I'm saying as x raised to 4 plus 5, also as what x raised to 6 plus x square. This is again a binomial. So this type of terms we call as what? Binomials. Two terms in the polynomial is there. That type of terms we call as binomials. And whenever three terms is there, again, same thing that we call as what? Trinomials. Yeah. So you can take like this also. I mean, like you must have heard like 3x plus 5. Uh, what type of equation is this? Just write in the chat box. What type of equation is this? Just write in the chat box. What type of equation is this? Yeah, very nice, Achieved. Yeah, perfect. Quadratic, I mean, like. And again, it is a trinomial only. Yeah, perfect. Good. So all these things we're going to learn into this. Yeah. Okay. Now here, yeah. So next is we call as we're going to learn what types of polynomial based on the degrees. This is very basic concepts. I mean, you must have learned in 10th standard also as well as 9th standard also. Very basic it is. So here you'll see what is degree basically. Degree is what? Variable you are taking. Variable raised to some power. Yeah. A variable raised to some power. That is what degree over here like. Yeah. And we take the highest degree over here. Highest degree we take. So in this, how many variables are there? Only one variable is there. That is y. Y, the power over here is 1. So its degree is what? 1. Now if you'll see in the next question, next example, if you'll see this, you can see this. I mean, like 2y square plus y plus 1. And y, the power of y is what? 1. And y square it is. The power of y is what? 2. So as I told you, you have to consider the highest power. That is degree of that equation. That is called as what? Degree of that equation. Degree of the equation. So degree of this equation is what exactly over here? 2y square. So degree is what? 2 over here. Yeah. Now simply over here also if you'll see this. So we have got x cubed plus x square plus 2x plus 3. If you'll see this, the degree of x over here is 1. The degree of x square is 2. I mean, like the power of x square, x is 1, the power of x is 2, and the power of x is 3. So here, take the highest degree, like the highest power. So highest power over here is what? 3. Yeah. So this is what you call the degree of this equation is 3. Yeah. If I'll ask you x raised to 4 plus x cube plus
2x plus 6. Can you tell me the degree of this equation? Write in the chat box. Yeah, perfect. Very nice, everyone. Yeah, very good. Very nice. So this is what you call as degree of any of the equation. Very easy to find. Just check the variable and check the variable which is having the highest power, that you call as what degree of that equation. I hope till here it is very clear to everyone. Just say clear in the chat box. Then I'll proceed further with the next slide. Yeah, good. Yeah, very good. So, acha. Very nice. So proceeding forward. Um, I have done certain this also to make you understand. Yeah. See, one pictorial view is also there for you. If you'll see this, only one tire is there, only one wheel is there. This is what I'm calling this as monomial. Here it is, two wheel is there. I'm calling this as binomial. Here you can see this three wheel is there, one, two, and this is three wheel is there. I'm calling this as what? Trinomial. Um, so just a pictorial way. I mean, like if you haven't understood, then for them it was. Now, next we call as for any of the polynomials, we have zeros of polynomials. Yeah, zeros of polynomials. So I hope you have understood. Like one is monomial, other is what binomial, and third was what trinomial. Yeah, and having more power than that, that you call as what polynomials also. Poly means what? I mean, like it is like polynomials. I mean, like poly means what? Many. Simple. Like this is what many. It is like this. Yeah, someone is talking. Yeah, Yogesh. Yeah, many. Yeah, very good. Poly means many. Yeah, correct. Nominals means the powers. I mean, like lot of variables is there. Yeah. So next concept we call as what? Zeros of polynomials. You must have solved like this. If I'll ask you to solve this, x square, um, x square minus 2 equals to 0. Can you solve this? Anyone from? Can you solve this? Anyone from you? What can be the value of x over here? I'm just checking it out, though I'm going to teach this. Anyone from you? Come on. यार पढ़ा है आपने 10th में? Okay, fine. So, someone has got, yeah, very good, Tanvi. Uh, Perfect, awesome. So you're saying as x equals to root 2. Yeah, very good. So here you're getting as what? X square minus 2 equals to 0. So as you're saying as x equals to root 2 is the answer of this. So very good. Like when you're putting x ka value as root 2, देखो root 2 minus 2, you'll be getting as root 2 the whole square is 2. 2 minus 2 you're getting as 0. Yeah. So you have, I mean, like zeros of polynomial is basically you have to find the value of x such that your LHS should be equals to RHS. Simple, I mean, like very basic concept it is. Yeah. Suppose here it is. I'll take one example. Then I'll like suppose the polynomial is like 5x cube minus 2x cube plus 3x minus 2. Yeah. Now zeros of polynomials here it is like before I start with this zeros of polynomials, try to figure out how to substitute the values. I'm taking as f of x or p of x equals to 2x square plus 3x plus 5. Suppose if I'll ask you, just find the value of f of 2. Yeah. So simply what you have to do, put wherever x you are getting as, put the value as 2. Put as x equals to 2. So you'll get as what? 2 into, what you'll get? 2 ka square. 3 into 2 plus 5. I'm just repeating it out. You must have learned this in 11th, 10th standard. So this is 2 into 2 ka square is 4 plus 3 into 2 is what? 6 plus 5. So this is what? 2 into 4 is 8 plus 6 plus 5.
Yeah, and then you get the value just by adding this. So this is how you find or substitute the values in any of the functions. I mean, like this is what we call as functions, huh? In polynomial function we call. Now I'm asking one question to you. Just try to figure it out. Like if I say as f of x equals to x raised to 4, 3x minus 2x plus 6. Find the value of x equals to 3. Get me the answer, final answer. Come on. And write in the chat box. Let me check it out, whether you have understood or not. How we are substituting the values. So what you have to do, just put the value of x as 3. Put the value of x equals to 3. Come on. Write in the chat box after getting the answer. Sorry. So we're getting the value as what? 90, 90. Yeah, awesome. Someone has got a 78. Varsha, you have got 78. Everyone is getting us 90. So what we are doing basically over here is simple thing what you have to do. In place of x, what you have said like just f of x equals to this is the function, polynomial function it is, x raised to 4 plus 3x minus 2x plus 6. So I'm saying as x equals to 3. That means 3 raised to 4 plus 3 into, this is what 3 minus 2 into 3 plus 6, like this it is. Yeah. So then after substitution, you'll be getting as 90. After calculating it out, you'll be getting this as 90. So this is how you substitute the values. Yeah. Varsha, is this clear now? Where you have made a mistake, I hope you have understood. The rest, everyone is getting 90. Varsha, is this clear? Yeah? Okay, fine. Thank you. Now, so over here also, if you see this, I have got a function, polynomial function over here. P of x equals to 5x cube minus 2x cube plus 3x minus 2. So what I've done over here, if we find, if I'll ask you to find P of 1. So P of 1 I'm saying. So P of 1, in place of x, just put the value of x as 1. X equals to 1. So same thing. P of x का value इधर 1 रखा है. So this is 5. This is 5. X equals to what? X cube it is like. So x का value 1. 1 raised to this is 3 like this. Minus 2 over here minus 2. 1 का cube it is. Okay, इधर mistakes था. 1 का cube. Then plus 3 into x का value it is 1 minus 2. So after solving it out, I'll be getting as 4. So this is how you find the values. You know, this is how you find the values. Now I'll come to zeros of x. I hope this is clear. The finding the values is clear, I feel. Is this clear? Finding the values is clear? Finding the values is clear till here? Yeah, everyone? Okay, fine. Uh, okay, very good. So let me take another PPT actually. I think, yeah. Hold on, let me open my other PPT also. PPT 2.
Just a second. I'm just sharing the other PPT. Hold on. Ah, okay. Okay. So, fine. So before this, I would like to explain zeros of x. Yeah. अब zeros of x समझने का try करना. Here the term zeros of x. Zeros of polynomials. इसको समझो बस. Take any of the polynomials. I'll say as I said, like x square minus 1 equals to 0. I mean, like, what can be the zeros of this polynomial? So, simple thing क्या करना है इसमें? You have to find the value of x such that your LHS, after substituting the value of x, you should get as 0. Like, suppose if I'm testing it out, like, suppose if I'll say as x equals to 1. So, इधर क्या होगा? X के place पे 1 रखो. तो 1 minus 1. I'm getting as what? 0. So, my x equals to 1 is what? 0 of the polynomial. Is this clear? I'll take another equation also. Is this clear? Is this clear, guys? Yeah? Is this clear? The basic one? Okay. Now, another equation I'm taking. I want you to find also along with me. Uh, if I'll ask you to find, suppose if I'm saying as f of x or p of x, f of x equals to x square minus 2x. Like this is the equation, and you should get as 0. Chalo, come on. Get me the 0 of this equation. Come on. Get me the zeros of this equation. Write in the chat box, guys. Get me the 0 of this equation. Yeah, everyone I want. There are 12 guys actually. Come on, everyone. सब लिख दो आंसर्स अपने. Till 9 responses I've got. Come on, rest everyone. बाकी के भी सब डाल दो अपने आंसर्स. Perfect. So you're saying as, yeah, very good. 2, 2, 2, very good. So this is what you call as zeros of x. Let me check it out, like how you're saying as 2. So x equals to 2 you're putting. So 2 ka square minus 2 into 1. So you'll be getting as what? 4. Is it like this? 4 minus 2. This is you are getting as 0. Is this 0? x equals to 2 बोल रहे थे आप. और RHS में मुझे 0 आना चाहिए. x का वैल्यू मैंने 2 रखा तो मुझे 0 नहीं आ रहा है. अच्छा सॉरी मतलब दिस इज 2. एक मिनट. या 0 0. Perfect. Sorry. I substituted 1 over there. Sorry, extremely. Yeah, correct. Is correct. I'll take one more equation. I'm taking it. Like try to solve this one. 3x plus 1 equals to 0. Can you figure it out? Come on. Can you figure it out? Though I'm going to teach this, I'm just checking it out, like on what level you stand on it. So, yeah, guys. Come on. Okay, no issues. Though I'm going to teach this, I'm taking one more easy example. I want you to solve this one. I'm like, I want you to find the zeros of this. Come on. Find the 0 of this polynomial.
You have to find the value of x such that you should get as 0. Come on. Get me the value of x in this. You have to, again I'm repeating, zeros of polynomial are the values of x such that p of x should be 0. Yeah, again I'm repeating that zeros of the polynomial p of x, I'm saying this p of x, yeah, are the values of x, I'm saying as such that your p of x का value should be equals to 0. ये 0 के बराबर होना चाहिए. Come on, get me the answer of this. चलो, x का वैल्यू यहां पर निकाल के मुझे दे दो कि आपका p ऑफ x मतलब p ऑफ x 0 होना चाहिए. तो x का क्या वैल्यू हो सकता है कि आपको x का वैल्यू 0 हो? Come on, guys. Yeah. I've got answer from Harjot. Okay. Rest everyone, your answers. Okay, only Harjot has given the answers. Okay, fine. See, it's very easy. What you do over here is, करना क्या है यहाँ पर? सिंपल है. What I said like कि p of x का वैल्यू 0 होगा. तो p of x का वैल्यू 0 होगा. That means अब p of x का वैल्यू क्या है यहाँ पर है? 5x plus 7. The equation is what? 5x plus 7. So take this as 5x plus 7 equals to 0. Ultimately, we are finding the value of x. So 5x is equals to what? This plus 7 is there, na? Take it to the RHS side. This becomes what? Minus 7. So x is equals to what? Minus 7 by 5. So after putting x equals to minus 7 by 5, you will be getting the value as 0. You can check it out. 5 into what? Minus 7 by 5 plus 7. So you can check it out. 5 gets cancelled. Minus 7 plus 7. Answer is what? 0. I hope this is clear to everyone. Come on. If this is clear, just say clear in the chat box. I'll take one more example. Tanvi. Yeah. Rest everyone. Come on, guys. Varsha, Ayush, Komal. Yeah, come on. Rest everyone. Only 4 or 5 persons. Yeah, clear, guys. Okay, perfect. Yeah. So I hope this is very clear to everyone. Very good. One more example. I want you to solve this. Try this out. If I take p of x equals to minus 9x plus 3. Okay, try to solve this out. Get me the value of x. What can be the zeros of this x only? Zero of this polynomial. Come on. Get me the zero of this polynomial. Write in the chat box. Okay, I've got 2 responses. Come on. I've got an answer from, yeah, rest everyone. Come on, guys. Tanvi has given him the answer. Harjot. Yeah, Yogesh, Varsha. Very good. Okay. Okay. So basically, again, I'm saying as polynomial of, 0 of this polynomial is what? P of x equals to 0 you should get. Simply put over here like, what is P of x ka value? That is minus 9x plus 3. Minus 9x plus 3 equals to 0. So ultimately, you have to find the value of x. तो माइनस 9x इक्वल्स टू ये 3 को आप RHS में लेके जाओ. दिस बिकम्स माइनस 3. तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस 3 अपॉन माइनस 9. दिस माइनस माइनस गेट्स कैंसल. 3 3 जा 9. सो बेसिकली 1/3 इज द आंसर ऑफ दिस. तो आप 1/3 इसमें डालोगे तो यू विल गेट एज 0. जस्ट चेक इट आउट. x का वैल्यू देखो 1/3 रखो यहाँ पर. दिस इज 3 ओवर हियर. 3 3 जा 9. So minus 3 plus 3, answer you're getting as 0. I hope this is very clear to everyone. Yeah, those who haven't understood, like, I hope this is clear now.
या कुछ लोग -1/3 लिखे थे आंसर, but it is 1/3. I hope. Clear, guys? Yeah, very good. Fine. So I'll proceed further. So this is what we call as zeros of x. Yeah. Now what I've written, again, I've written the same thing as PPT was shared in the last. So same thing I've written. The degree of a polynomial is the highest degree of its terms when the polynomial is expressed in canonical form, that is linear combination of monomials. The degree of term is sum of exponents of variable that appear into. Simply think, इतना आप समझो. एक्चुअली ये थोड़ा सा डेफिनेशन इसमें कैनोनिकल फॉर्म एंड ऑल लाइक थोड़ा सा हायर हो जाता है, बट इतना आप समझो कि degree of polynomial is the highest degree of its term. Simple. That is what we call as degree. One example I'm asking, like question, just try to figure out like x square plus. इसका आंसर मुझे बताना है आपको. Come on, get me the degree of this polynomial. You're testing it out like. Yeah, very good. Yeah, perfectly, I've got it. सही है. So 6 is the degree of this polynomial because अब ये चेक कर लो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x⁻6 लिख सकते हैं. Those who aren't aware, like x⁻m⁻n जो होता है उसको हम लिखते हैं x m into n. So basically when I'm saying like x²⁻3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x⁻2 that is what x⁻6. Yeah. If I'll take like अगर मैं बोलता हूँ x⁻6⁻7. Yeah, so basically this is what x⁻6 into 7 like this it is. Yeah, I hope this is clear. The concept is clear. This concept is clear, guys. This concept is clear. Yeah. Okay. Only one response I've got. Come on, there are 11 guys are there. Okay. Okay, perfect. Now, आ जाते हैं अभी next वाले पे. So, whenever degree is equals to 0, that term you call as constant. I'll take one example. How many terms are there in this? How many terms are there in this? Only one term is there, yeah. So this is what we call as constant, yeah. Like there's 6 only is there. There's no variable at all, yeah. So I mean like this is constant. चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, इसको आंसर करने का ट्राई करना. और 7x⁻0. Come on, get me the degree of this one. Okay, Tanvi, Ayush. Okay, yeah, फंस गए. कुछ कुछ फंस गए. देखो, anything raised to 0 I'll say as that equals to 1 it is. I'll say like my name, I'll say as Sushil raised to 0, that is 1. Varsha raised to 0, 1. Komal raised to 0, 1. Yeah. Uh, Jay raised to 0, that is 1. So basically x raised to 0 क्या हो जाएगा, 1 है. तो 7 into 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा. या सो 7 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, कांस्टेंट है. अब कांस्टेंट को समझो कि कोई भी नंबर, बस नंबर, ओनली नंबर इज द कांस्टेंट. का आप इतना सिंपल शब्दों में समझो कि ओनली नंबर इज देयर इज नो वेरिएबल एट ऑल अलोंग विद इट, ओनली नंबर इज देयर. Yeah, so that type of terms we call as constant. Like I'll say as 100, 200, 300. That is number. उसी को मैं अगर ट्विस्ट करके लिख दूं 100x⁻0, तो ये क्या हो जाएगा, 100x⁻0 क्या हो गया, 1 हो गया. तो बेसिकली ये 100. तो इसका डिग्री अगर किसी ने पूछा 100x⁻0, x⁻0 का डिग्री क्या है, 0 ही हो जाएगा. तो ये देखो 0 डिग्री होगा तो वो टर्म क्या होता है, कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट टर्म का डिग्री इज 0. सिंपल, वैसा वर्सा. आई होप दिस इज क्लियर. Come on. If this is clear, say yes. I hope this is clear to everyone. Say yes in the chat box. Great. Okay. Perfect. Proceeding forward. Now, next one. Degree is equals to 1. That type of equation we call as linear equation.
जब भी डिग्री 1 होता है that type of equation we call as one, like linear equation. Also as 2x plus 3. What is degree of this? x का पावर क्या है इधर? 1 है, या 1 है, या परफेक्ट. सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस वी कॉल एज लीनियर इक्वेशन. जब भी डिग्री 1 होती है तो लीनियर इक्वेशन बोलती है. नाउ हियर इट इज, इफ आई टेक एज 2x square plus 3x plus 4. So what is the highest power in this equation? Come on. Highest power in this equation is, yeah, perfect. So whenever the highest degree is to, I mean, like the whenever the degree of the equation is 2, that type of equation we call as quadratic equation. Yeah, you must have seen. Like, one more example, I'll take it like this. चलो इसको मुझे बोलो कि ये कौन सा इक्वेशन है? 3 + 4x² ये बोलो कौन सा इक्वेशन है ये? कांस्टेंट है कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है? कम ऑन. समवन सेड लीनियर. जय लीनियर बोल रहा है. ओके. जय, यू मेकिंग अ मिस्टेक एक्चुअली. आप वेरिएबल को चेक करो. इधर वेरिएबल कौन है? इधर एक्स वेरिएबल है. एक्स के पास पावर कितना है? 2 है. या सो 2 डिग्री जिसके पास 2 है, मतलब ये इक्वेशन का डिग्री क्या हो गया? 2 हो गया. ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. हाँ जय, अभी इज दिस क्लियर? यस. या परफेक्ट, गुड, वेरी नाइस. Now coming to the third one, whenever you are having a degree of 3, that type of equation we call as cubic equation. I'll take one example, like also as x cube plus 4x square plus 3x plus 5. So ये टाइप वाले इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं? क्यूबिक बोल सकते हैं, जिनका डिग्री एट द मोस्ट कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए. अगेन वन मोर क्वेश्चन आई एम आस्किंग जस्ट टू चेक इट आउट. 5 + 6x + 10x³ बोलो ये कौन सा इक्वेशन है? कम ऑन, कम ऑन गाइस. हाँ ओके, क्यूबिक, या परफेक्ट. यस क्यूबिक है, मतलब समझा है आपको. वेरी गुड. whenever simply like whenever degree 4 is there, that type of equation we call as quartic और बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं उसको. डिग्री 4 का इक्वेशन कैसे दिखेगा? x⁴ प्लस 3x² प्लस, आई मीन लाइक x³ ऑल्सो यू कैन टेक इट लाइक 6x² प्लस 5. तो डिग्री उसका पावर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए एट द मोस्ट. सो दैट टाइप ऑफ इक्वेशन वी कॉल एज व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कॉल एज, और बाई क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हो. सो लाइक दिस इट वैरीज. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, डिग्री 0 कांस्टेंट है, डिग्री 1 लीनियर इक्वेशन, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 3 क्यूबिक इक्वेशन, डिग्री 4 क्वार्टिक और बाई क्वाड्रेटिक. टिल हियर इज दिस क्लियर टू एवरीवन? देन आई विल प्रोसीड फॉरवर्ड. जस्ट से क्लियर टू एवरीवन गाइस. Just say clear. Okay. Yes, yes, yes. Perfect. Proceeding forward then. Now, जिनको अभी भी क्लियर नहीं होगा उनके लिए. सो क्या करो जिनको क्लियर नहीं है? दिस लास्ट आई एम टेकिंग असले को बोलिए. सो यहाँ पर जस्ट चेक इट आउट. हियर हाउ यू फाइंड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. लुक एट ईच टर्म. Whoever has most letters wins. Simple. जिनके पास ज्यादा लेटर्स है. इसके पास कितना लेटर्स है? x × x, 2 ही लेटर है. इसके पास कितना है? 4 हो गया. x × x × x, जिनको अभी भी नहीं समझा उनके लिए बोल रहा हूँ. ये किसके पास कितने लेटर है? 6 लोग हैं. इनके पास 6 लोग हैं. लाइक इफ यू सी दिस 3 एंड दिस 3, या सो दिस guy has 6 letters, therefore the degree is what? 6. Yeah. Now थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं मैं. नो जस्ट शेक इट आउट. अब मैं, अभी तक हम लोग क्या डील कर रहे थे मालूम है? वी वर टॉकिंग ओनली वेरी इन अ सिंगल वेरिएबल. हम लोग एक ही वेरिएबल में अभी तक बातें कर रहे थे. मतलब एक्स है तो हर एक बंदे एक्स में रहेगा. नो इसी को मैं ट्विस्ट करके 2 वेरिएबल लेकर आ रहा हूँ, एक्स एंड वाई. और कभी किसी ने पूछ दिया, लाइक समवन आस्क्ड यू लाइक कि 2 वेरिएबल में आप फाइंड करो कि इसका डिग्री क्या होगा. या तो सिंपल तरीका क्या है? मैंने बोला सिंपल तरीका,
We'll just check whoever has got most letters into it. Now, this is the equation if I'm talking. Just check it out. How many letters it has? Come on, answer this out. इसके पास कितने लोग हैं साथ में? Like there, how many people are there along with him? ये दोनों लोग कितने लोग हैं टोटल? Like x is there and y को हम लिखेंगे तो कितने बार लिख सकते हैं? 4 times. So y. Yeah, correct. So there are 5 persons are there. Very good. बहुत अच्छा पिक किया. वर्षा, हरजोत, rest everyone. Okay. Now, if you'll see this, इसके पास देखो आप. No, very good. बहुत अच्छा पिक कर रहे हो. Now, if you'll see this, इसके पास just check it out like x के x raised to 4 it is like तो x. Now, if you'll see this y, so y raised to 4 is there like so y को 4 बार लिखो y. How many letters are there? Total how many are there? Come on. Yeah, 8 are there. Very good. Yeah, very good. So simple. Yeah, so that is what I said. Like whoever has most letters wins. That is your degree. So whenever anyone asks you that polynomial in two variable, उसका डिग्री बताओ तो इसके पास कितना है? इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 8 is there. Yeah. Now you have picked it out quite easily. इतना क्लियर हो गया है सभी को. ये perfectly is this clear, crystal clear. Crystal clear, guys. Then I'll proceed forward. Crystal clear? Okay. Yeah, perfect. गुड. चलो बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. नो, इसको मैं बढ़ाने के लिए ठीक है. यहाँ पर देखो, जस्ट इसको समझना बस. कोई भी 2 डिग्री रहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लाइक इसको अगर किसी ने प्लॉट करने के लिए बोल दिया तो उसका ग्राफ कैसे दिखेगा? इट शुड बी लाइक दिस. या सो द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इसके ग्राफ ऐसे दिखेंगे आपको. कर्व कर्व रहेगा. और लीनियर का ग्राफ कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन होती है. ये मैं बताऊंगा इजी करके और भी आगे जाके. आई टेक वन क्वेश्चन देन मैं बताऊंगा. तो डिग्री 1 जब ही रहता है या लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे दिखेगा? तो यूल सी लाइक अगर ये एक्स एक्सिस है या एक्स डैश एंड दिस इज ऑल कॉल्ड वाई एंड दिस इज वाई डैश 0, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा. या लीनियर का ग्राफ ऐसे रहेगा. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिग्री 2 का ग्राफ, सो डिग्री 2 का ग्राफ मतलब क्वाड्रेटिक का ग्राफ इट शुड लुक लाइक दिस, कर्व रहेगा. इज दिस क्लियर? लीनियर का इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक का ग्राफ. इज दिस क्लियर हाउ दे लुक लाइक? Linear will look like straight and quadratic will be looking like curve graph. Yeah. Okay. Now बढ़ते हैं आगे. ओके, आ जाओ. सो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं टू सम अप ऑल व्हाट वी हैव डन टिल नाउ. अभी तक जो हमने किया उसको सम अप करने के लिए ये एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर. सो पॉलिनोमियल्स डिग्री, which type of equations? Name using degree, number of terms, and name using number of terms. If you'll see, this polynomial is what? 4. या तो इसका डिग्री क्या है? 0 है. ये 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू एक्स रेस टू 0. मैं रेड लेता हूँ, दिखाएगा मैंने आपको. या होल्ड ऑन. या सो दिस इज 4 इज 4x रेस टू 0. दिस कैन बी रिटन लाइक दिस. तो ये देख सकते हो इसका डिग्री कितना हो गया? 0. और एज आई टोल्ड यू, जब भी 0 डिग्री होती है तो वो कांस्टेंट होता है. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो एक ही टर्म है, सिंगल टर्म्स, दैट इज 1. एंड दिस टाइप ऑफ टर्म्स वी कॉल एज व्हाट? मोनोमियल. या सम अप कर रहा हूं मैं अभी तक जितना किया मैंने. देन कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दिस इज 3x प्लस 6. इफ यू सी दिस, x का पावर क्या है? यहाँ पर 1 है, तो इसका जो डिग्री होगा वो 1 होगा. और मैंने बोला कि जब भी डिग्री 1 होता है तो वो वाले इक्वेशंस क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशन होते हैं. इसमें टर्म्स कितने हैं? 2 टर्म्स है. यहाँ पर 2 टर्म्स आप देख सकते हो. एंड दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस वी कॉल एज बाइनोमियल. अगेन हियर इट इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. चेक इट आउट, द हाइएस्ट वन x का स्क्वायर है तो इसका डिग्री इज 2. दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस वी कॉल एज क्वाड्रेटिक.
एंड इसके पास कितने टर्म्स है? तो देर आर 3 टर्म्स इनटू दिस, 1 2 3, सो देयरफॉर इट इज ट्राइनोमियल्स। कमिंग टू दिस वन, ये देखो यहाँ पर ट्विस्ट किया मैंने अभी यहाँ पर फिर से, ये और ये डिफरेंस बताने के लिए इसमें और इसमें। सो इफ विल सी दिस 2x³ डिग्री फाइंड कर रहे हो आप, x का पावर चेक करो, x का पावर इज 3 ओवर हियर, सो डिग्री इज 3 ओवर हियर। दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस वी कॉल एज क्यूबिक, क्योंकि 3 है डिग्री तो क्यूबिक है। कितने टर्म्स है इसमें? तो एक ही अकेला बंदा है, ये सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म रहेगा तो उस नेम यूजिंग द नंबर ऑफ टर्म्स, सो 1 है तो क्या होगा? ये मोनोमियल रहेगा। अगर 3 रहेगा तो ट्राइनोमियल होता है, 2 रहता है तो बाइनोमियल, 1 इज व्हाट? मोनोमियल। इज दिस क्लियर? नाउ इफ यू सी दिस अगेन, यहाँ पर अगर डिग्री पूछूंगा मैं बोलने के लिए तो 3x⁴ है यहाँ पर, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक है। How many terms are there? So again you will say that is 2 terms are there, and जब भी 2 terms होते हैं तो वो terms को हम क्या बोलते हैं? That we call as what? Binomial. Is this clear till now? Everything is crystal clear till now. अभी तक पूरा क्लियर है एवरीवन? ये सम अप किया मैंने जो किया था अभी तक, या ओके एवरीवन कम ऑन, सबके सब आंसर्स दे दो, क्लियर है तो आई प्रोसीड फॉरवर्ड। ओके सो अभी हम आइडेंटिटीज पे आते हैं जो आपने 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में की थी। सो बेसिक बेसिक आइडेंटिटीज में मैं एक एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट लाइक क्वाइट इजीली। सो a + b द होल स्क्वायर इज व्हाट? a² b² + 2ab। आपने ऐसा भी याद रखा रहेगा यही चीज को, a² + 2ab + b², आपने ऐसे भी याद रखा रहेगा। सो हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। लाइक अगर मैंने पूछ दिया आपको x+2 द होल स्क्वायर को एक्सपैंड करो, सो x का प्लेस पे, a का प्लेस पे कौन है? x है। b का प्लेस पे कौन है? 2 है। सो हाउ इट विल लुक लाइक, a का प्लेस पे कौन आना चाहिए? x, तो यहाँ पर x² होगा, प्लस b का प्लेस पे कौन आना चाहिए? तो b का प्लेस पे कौन है? 2 है, सो दिस विल 2² प्लस 2, a का वैल्यू डालो, a का वैल्यू x है, तो ये देखो a का वैल्यू डाला यहाँ पर x, और b का वैल्यू इज व्हाट? 2 over here, so this is 2. So ultimately after expanding I'm getting as what? x² plus this is 4 plus 4x. Is this clear? The expansion is clear to everyone. Is this expansion is clear? Yeah? सभी को क्लियर है ये? ओके चलो, वन I'm just asking one of the expansion of this. Just try to figure it out. Like, let me check whether you have understood very clearly. I want you to expand 3 + x द होल स्क्वायर। चलो इसको एक्सपैंड करके दे दो मुझे चैट बॉक्स में, कम ऑन। Expand this and write in the chat box. So you have got the value of a का प्लेस पे 3 होना चाहिए, b का प्लेस पे x होना चाहिए। Come on, expand and write in the chat box. Yeah, very nice. Tanvi, Varsha. Come on, guys. Okay, Harjot, very good. Yeah, those who haven't understood, for them I'm solving. Again, I'm repeating this. See, x का प्लेस पे इधर कौन है? अभी 3 है, b का प्लेस पे it is x. So I'm going to expand. No, sorry, a का प्लेस पे it is 3 and b का प्लेस पे x. So we're going to expand. So 3 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू डालो, तो b is what? X over here. So this is what x² plus 2 into a into b. So a का वैल्यू, a का अगेन I'm saying a का वैल्यू क्या है? 3 है. So this is 3 over here. b का वैल्यू we have to put it over here. So b is what? X over here. So this is what x.
So I'll be getting as what? 9 plus x square plus 2 into 3 is what? 6. So 6x. Yeah, and that is what most of you have got the answer. Very nice. Yeah, very good. Proud of you all. Yeah, बहुत अच्छा. So ये समझा आपको. चलो इसको देखते हैं अभी. A माइनस बी वाला. यू मस्ट हैव स्टडीड दिस ऑल्सो. ए माइनस बी भी क्या रहेगा? आपने ऐसे पढ़ा रहेगा इसको. ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. उसी चीज को मैंने ऐसे लिखा है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी लिखा है. या सो विल सी टू फिगर इट आउट. एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर अगर मैं पूछता हूँ. सो इसको एक्सपैंड कैसे करोगे? तो ए का प्लेस पे इट इज एक्स एंड बी के प्लेस पे इट इज टू ओवर हियर. सो दिस विल लुक लाइक व्हाट? एक्स का स्क्वायर प्लस इधर बी का वैल्यू यू हैव टू पुट इट. सो बी इज व्हाट? टू ओवर हियर. सो टू का स्क्वायर माइनस टू. दिस इज टू सेम. ए का वैल्यू डालो. ए का वैल्यू इज व्हाट? एक्स. एंड बी इज व्हाट? यहां पर अभी बी का वैल्यू पुट करना है. सो बी इज व्हाट? टू ओवर हियर. सो दिस इज टू. So it looks like what? X square plus 4 minus 4x. I hope this is clear. Now, I want you to solve one question. Yeah. एक चलो सॉल्व करके दे दो मुझे. 3 minus x the whole square. चलो इसको एक्सपैंड करो आप. Let me check it out whether you have understood. Very basic concepts I'm taking, guys. Just आपके थोड़ा सा ब्रश अप कर रहे हैं. फिर हम लोग क्वेश्चंस लेंगे थोड़े थोड़े. टफ टफ. पहले ब्रश अप हो जाओ आप लोग. Come on. Expand करके. I want all the 10 responses. There are 11 guys into this. इंक्लूडिंग मी 11 है तो 10 रिस्पॉन्सेज आने चाहिए. कम ऑन. Yeah, till now only 2 responses. Come on, guys. Oh, come on. Rest everyone. Come on. Yeah, perfect. Perfect. Very nice. Yeah, proud of you all. Very good. Nicely you have picked it out. चलो अब इसको एक्सपैंड करते हैं. You have read this also. A square minus b square is equals to a plus b, a minus b. ये पढ़ा रहेगा आपने. इसको एक्सपैंड करने के लिए अगर मैं बोलूँ आपको, इफ आई आस्क यू लाइक एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, तो इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे हम लोग? इफ यू सी दिस, a का वैल्यू क्या हो जाएगा? x है एंड b का वैल्यू इट इज 2. या सो दिस लुक्स लाइक व्हाट? x प्लस टू. ये देखो x प्लस टू. ये प्लस का साइन. नेक्स्ट इज व्हाट? इट इज व्हाट? x माइनस टू. इज दिस क्लियर? द थर्ड वन इज ऑल्सो क्लियर. इज दिस क्लियर? जस्ट से क्लियर. सी लिख दो चलेगा मुझे. क्लियर लिख दो ये चलेगा. वेरी गुड. या अभय वेरी गुड. योगेश या गुड. क्लियर है? ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ टू मल्टीप्लाई दिस वन. सो x माइनस ए, x माइनस बी, इसको एक्सपैंड कैसे किया है वो मैं बता देता हूँ. ये फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा, बट इसका एक्सपेंशन में दिखाता हूँ. आपको सिंपली क्या करना होता है? आप क्या करो? एक को एक्सपैंड करो और दूसरे को कॉमन रखो. whenever you're getting a terms like this, या दो ब्रैकेट के टर्म्स आते हैं. I'll explain over here. लाइक x माइनस ए, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैंने बोला कि एक को एक्सपैंड करो तो इसको एक्सपैंड कर दो. सो x हो जाएगा यहाँ पर. दूसरे को कॉमन रखो तो इट विल लुक लाइक व्हाट? x माइनस बी. ये x दोस्ती करेगा ये पूरे ब्रैकेट के साथ, और फिर माइनस ए भी दोस्ती करेगा पूरे ब्रैकेट के साथ. तो माइनस ए एक्स माइनस बी. सो इट लुक्स लाइक व्हाट? x इंटू एक्स इज व्हाट? एक्स स्क्वायर. x into minus b is what? Minus xb. Minus a into x is what? Minus ax. And minus a into minus b is what? Plus ab. I hope this is clear. Yeah, clear guys? Is this clear? Yeah, ये थोड़ा गलत लिखा लगता है यहाँ पर. ये गलत. हाँ ठीक है. ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पर. Is this clear? ये गलत थोड़ा सा. Clear है? Okay. No, not clear. Okay, fine. I'm taking one example. I'm lecture. Try to understand. ठीक है. ये देखो रुक जाओ.
चलो इसको एक्सपैंड कर रहा हूं मैं। मैंने क्या बोला? देखो, सपोज इफ आई आस्क यू x-2 और x-3 की वैल्यू दे दो आप, इसको सॉल्व करके दे दो, मल्टीप्लाई करके, जस्ट सिंप्लीफाई एंड गेट मी द आंसर ऑफ दिस। तो मैं क्या करूंगा, इसको कैसे करना होता है? तो सिंपली व्हाट यू डू, यहाँ पर एक को कॉमन रखो, एक को एक्सपैंड करो। तो इसको एक्सपैंड करते हैं हम लोग, मतलब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और इसको कॉमन रखेंगे। बताता हूँ मैं क्या है एग्जैक्टली। I'll राइट एज x ओवर हियर। यहाँ पर क्या लिखूंगा, x-3। मैंने क्या किया, पहले वाले ब्रैकेट को खोल दिया है, ओपन कर दिया, एक्सपैंड कर दिया है, उसका फर्स्ट टर्म लिखा है, नेक्स्ट वाले को कॉमन थिंग को यहाँ पे लिख दिया। इसका सेकंड टर्म इज व्हाट, -2, सो आई एम राइटिंग एज -2 x-3 अगेन। मैंने क्या बोला कि एक को एक्सपैंड करो, दूसरे को कॉमन ले लो। ये देखो कॉमन ले लिया और पहले वाले को एक्सपैंड कर दिया। इज दिस क्लियर? टिल हियर इट इज क्लियर? टिल हियर इट इज क्लियर या एवरीवन? अबे इट इज क्लियर नाउ? अबे, या, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्लियर, वेरी गुड। सो अभी क्या होगा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² हो गया। फिर ये वाला x -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो आई गेट एज व्हाट, -3x। माइनस ये हो गया, इसका पूरा दोस्ती खत्म हो गई। अभी नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, -2 दोस्ती करेगा x के साथ, आई गेट एज -2x। -2 दोस्ती करेगा -3 के साथ, मतलब -2 इंटू -3। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है मल्टीप्लीकेशन में। 2 इंटू 3 इज व्हाट, 6, सो आई बी गेटिंग एज +6 ओवर हियर। आई होप दिस इज क्लियर। सो इसको फर्दर लिखोगे तो x² -3x -2x, दिस विल गिव यू -5x +6। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। इज दिस क्लियर? अभी भी किसी को डाउट है, लेट मी नो। कम ऑन गाइस, इफ एनी डाउट इज देयर डू लेट मी नो, और इफ इट इज क्लियर जस्ट से क्लियर इन द चैट बॉक्स। ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट, या परफेक्ट, वेरी गुड। ओके ओके, very good. Okay, so we are done with this also. Okay, fine. It's almost 10 o'clock. Uh, till now, whatever we have done, any doubt is there to anyone? If anyone has got any doubt, if you're in Marathi also, like you can ask in Marathi also. No issues for me. काही doubt असेल तुम्ही विचारू सकता. No issues for me. कोई भी डाउट है आपको तो आप पूछिए मुझसे कृपया. If any doubt is there, please ask me. 3 माइनस एक्स स्क्वायर एक्सप्लेन करो ना सर. ओके, 3 माइनस एक्स स्क्वायर एक्सप्लेन करो. ठीक है, ये देखो, 3 माइनस एक्स द होल स्क्वायर. सो तन्वी हैज गॉट 3 माइनस एक्स द होल स्क्वायर. सिंपल इट इज. तन्वी क्या करना है आपको यहाँ पर? तन्वी कोई डाउट है ना ये? या तन्वी होंगी. तो आप क्या करो, देखो यहाँ पर सिंपल है. ए के जगह पे कौन है, 3 है. बी के जगह पे कौन है, एक्स है. और बीच में देखो माइनस है तो माइनस है. तो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर, मतलब ए का प्लेस पे कौन है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर. इधर देखो प्लस था बीच में तो प्लस लिखो. यहाँ पर बी का स्क्वायर आना चाहिए, तो बी के प्लेस पे कौन है, एक्स है. माइनस एक्स नहीं, बस बी का प्लेस पे कौन है, एक्स है. दिस विल बी लाइक एक्स स्क्वायर. बीच में माइनस का साइन है, ये देखो माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस लिखता हूँ. 2 लिखता हूँ, फिर ए और बी. ये देखो ए है तो ए की वैल्यू डालो. ए की वैल्यू कौन है, 3 है, सो यहाँ पर 3. बी की वैल्यू कौन है, 3x है, तो यहाँ पर x हो जाएगा. सो इट लुक्स लाइक व्हाट, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2 इंटू 3 6x. ये समझा तन्वी? क्लियर? या कम ऑन, इज दिस क्लियर तन्वी? ओके, एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क. किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क. नो डाउट्स, ओके परफेक्ट, सो फाइन. सर एक डाउट है. हाँ जी, पूछिए. जो अपना x माइनस है और x माइनस बी वाला क्वेश्चन नहीं है, उसको एक बार फॉर्मूले के थ्रू समझाते हैं क्या, क्योंकि थोड़ा साइंस का कन्फ्यूजन हो किसको रहा है ना. किसको? x नहीं, माइनस ये है. फॉर्मूला गलत लिख दिया है. ये फॉर्मूला मैंने टाइप गलत कर दिया है. ओके इसको मत देखो. ओके ओके ये फॉर्मूला, ये प्लस ए. ओके. इसको अगर मैं फॉर्मूले में लिखूं ना, रुको मैं फॉर्मूला भी बना देता हूँ इसका. इट शुड बी लाइक दिस हरजोत. देख लो यहाँ पर x-a, इसी को एक्सपेंड करता हूँ. ये कुछ फॉर्मूला नहीं है, बस एक्सपेंशन है.
लोग रट्टा मारते हैं इसको। सिंपल चीज है। एक को एक्सपैंड करो, ये पहले वाले ब्रैकेट को एक्सपैंड करो और दूसरे वाले को कॉमन रखो, यही मैंने पढ़ा है अभी तक। तो इसको एक्सपैंड करते हैं, I'll keep it as x over here, और दूसरे वाले को कॉमन चीज को यहाँ पे लिखते हैं x माइनस बी लिखता हूँ मैं। फिर दूसरा वाला टर्म क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस ए लिखता हूँ, दूसरा वाला जो यहाँ पर रहेगा x माइनस बी। इतना क्लियर है हरजोत? इज दिस क्लियर? क्लियर हरजोत? यू कैन अनम्यूट एंड आस्क, लाइक से यस सर, या। क्लियर। वेरी गुड। अभी हम क्या करेंगे इसमें, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, तो माइनस बी एक्स हो जाएगा। माइनस ए इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो माइनस ए एक्स हो जाएगा। माइनस ए इंटू माइनस बी, ये देखो माइनस ए इंटू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लीकेशन में, एंड ए इंटू बी इज व्हाट, ए बी। तो आई राइट एज व्हाट, प्लस ए बी। इज दिस क्लियर? फिर इसका फॉर्मूला यस सर। ऐसे हो जाएगा, बताता हूं आगे भी, एक्स स्क्वायर, ये देखो इन दोनों में ये दोनों टर्म देखोगे आप, इसको मैं सेपरेटली लिखता हूँ, समझने का ट्राई करना। माइनस ए एक्स लिख रहा हूं मैं, तो दोनों में क्या कॉमन है, माइनस माइनस है, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो। और क्या कॉमन है, एक्स एक्स है, तो यहाँ पर ब्रैकेट डालता हूँ, यहाँ पर एक्स लिखता हूँ। फिर देखो माइनस का कॉमन हो गया, तो माइनस तो हट गया यहाँ से, तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा। और एक्स भी चला गया, तो कौन सा टर्म बच रहा है, बस अकेले बी बच रहा है, तो यहाँ पर बी लिख दो। यहाँ पर देखो माइनस कॉमन हो गया है, एक्स भी कॉमन हो गया है, कौन बच रहा है यहाँ पर, ए बच रहा है, तो प्लस ए। अंडरस्टूड? तो ये क्या हो रहा है, माइनस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए बी। अंडरस्टूड? यस सर। ये फॉर्मूला है। तो ये वाला यहाँ पर माइनस ए बी लिखा था मैंने, वो प्लस ए बी होना चाहिए, वो टाइपिंग एरर है। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है। इफ यू वांट टू राइट नो इश्यूज, यू कैन राइट दिस फॉर्मूला। बट ये फॉर्मूला नहीं है, बेसिकली एक्सपेंशन है। आई विल कंसीडर दिस एज एक्सपेंशन। क्लियर? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताइए ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ जी, वो भी एक्सपैंड करके बताओ ऐसे ही। हाँ कैसे बताना है? सर। कुछ टर्म्स लेके बताओ। ये देखो यहाँ पर देख लो आप, हाँ, टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। हु हैड आस्क्ड दिस? अभय, यू, आपने यस पूछा सर। था। हाँ जी, यस तो सर। ये देखो, आई सेड लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे है। अब सपोज मैंने टर्म क्या लिखा है यहाँ पर, टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं पूछूं कि ए की वैल्यू क्या है, तो इसको अगर कंपेयर करोगे तो ए की जगह पे कौन है यहाँ पर, टू है। ए की जगह पे कौन है, टू है। और बी की जगह पे कौन है, एक्स। एक्स है। वेरी गुड। तो ये देखो एक्सपेंड, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होगा, ए के जगह पे वैल्यू डालो, ए प्लस बी ना। तो ए का वैल्यू क्या है, टू है, और बी का वैल्यू एक्स है, तो क्या होगा, टू प्लस एक्स। और ए माइनस बी, ये देखो दूसरा टर्म ए माइनस बी है, तो टू माइनस एक्स। क्लियर? ओके। एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क। और भी कुछ डाउट है सो यू कैन आस्क मी, नो इश्यूज।